Assalamu alaikum students, I hope you all would be fine. Today we are going to talk about our next topic and the topic is listening skills. As you know that in our course outlines we talked about this point that we will discuss and study different skills with respect to speaking, listening, writing, presentation, and all that. So, all these skills are equally important for a person to perform well in his professional field because you have to come across with many situations जहाँ पे आपने सुनना भी होगा, बोलना भी होगा, लिखना भी होगा, पढ़ना भी होगा. So how to speak good, how to listen in effective way, how to write successfully. So all these skills are very important for a person to have a successful professional life. So we are going to talk about listening skills today. Now, what is actually listening? This is something very important. Now, you would have heard a word hearing and listening. Now, there is a difference between hearing and listening. For example, if in one room you are listening to a speaker and there is also a sound of fan, right? अब जो फैन की आवाज आ रही है that is actually hearing because you are not concentrating, you are not focusing on that thing. आप उस पंखे की आवाज पे फोकस नहीं कर रहे, कंसंट्रेट नहीं कर रहे, बट अनकॉन्शियसली आपको सिर्फ उसकी आवाज आ रही है. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज हेयरिंग. Whereas in that same room, if a speaker is speaking, अगर वहां ही उसी रूम में अगर स्पीकर बोल रहा है तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज लिसनिंग. वहां पे आपने उस स्पीकर को लिसन करना है इंस्टेड ऑफ हियरिंग. आपने सिर्फ वहां पे स्पीकर की बात को सुन के इग्नोर नहीं करना. अनलाइक द साउंड ऑफ फैन, वहां पे आपने स्पीकर की बात को कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज लिसनिंग. सो व्हाट इज लिसनिंग? To hear something with thoughtful attention. Whatever you are hearing in the listening process, listening उसे कहते हैं कि जहां पे आप बात सुन रहे हैं और बात को सुनने के बाद आप उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं. You are focusing on that thing. You are attentive while hearing those sounds and words by the speaker. So listening is what? It is an activity. It is the attention, the focused mind. Which is actually done by a listener, and he does not only hears the word, वो सिर्फ words को सुनता नहीं है, but he also concentrates, he pays attention, he tries to understand those words. Listening में understanding is the most important thing, right? Because यहाँ पे listening में सिर्फ आपके कान सिर्फ attentive नहीं है, आपका mind will also be equally attentive, and it must be attentive in listening process. Otherwise, a listener would complain that I didn't understand anything. मुझे कुछ समझ नहीं आई. अब वो समझ क्यों नहीं आई? Because although you were, कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं that you were present physically but you are not mentally present. आप physically तो present हैं but mentally you are absent. So what does mentally absent mean? That you are not concentrating on the words. So listening is that activity in which your ears as well as your mind, they equally they both perform their equal and important role in understanding and perceiving the words which are said by the speaker. आपने उन words को understand करना है, ना ही सिर्फ सुनना है. Because जब आप सिर्फ सुनते हैं और focus नहीं करते, when you are not paying attention to those words, when your mind is inactive or your mind is passive, then you don't understand those ideas, right? So what are the skills which are important for successful listening? वो कौन सी methods हैं जो कि successful listening के लिए important हैं? The first method is active mind, concentration and focused mind. Yes, whenever you are hearing the words by the speaker, if you want to understand the ideas, right, what you should do? You should have active mind, and this active mind results and leads to active listening. जब आपका mind active होता है, when you are concentrating, when you are paying attention, then it means you are doing active listening. Whereas if you are not paying attention, right, if you are not concentrating, if you are not perceiving the words which are said by the speaker, तो इसका मतलब है आप passive
लिसनिंग कर रहे हैं. सो व्हाट यू शुड डू इफ यू वांट टू अवॉइड एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि हमें समझ नहीं आई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट यू शुड डू, आपने एक्टिव लिसनिंग करनी है. यू शुड ओपन योर माइंड, यू शुड बी वेरी अटेंटिव व्हेनेवर you are listening the words by the speaker. Second skill, second method is what? Listen for keywords and ideas. Whenever you are listening, you should be very attentive. You should focus on the keywords, important words, and the important ideas said by the speaker. आप कोशिश करें कि important ideas पे concentrate करें. आप focus करें what are the main essential points which the speaker is sharing. जो speaker share कर रहे हैं हमारे साथ, अच्छा जी, this is the first point which he has shared, this is the second point which he has shared, and say for example the speaker has shared 4 key and important and essential words and ideas which today I have understood. तो उन important ideas पे focus करें जो कि आपके साथ speaker share कर रहे हैं. In this way you will be clear about all the content of your listening process. आप उस listening process के content के बारे में बड़े clear हो जाएंगे. Third is what? Try to connect what you hear and what you already know. Usually you would have this experience in your life कि कभी आप कोई मूवी देख रहे होते हैं, sometimes someone tells you a story, आप स्टोरी सुनते हैं और स्टोरी सुनते सुनते आप एक माइंड में कनेक्शन डेवलप करते हैं. अच्छा जी, ये वही बात है जो मैंने पहले भी सुनी थी, ये वही मूवमेंट है या वो टर्न है जो जिसका मैंने एक्सपेक्ट भी किया था, या इस चीज से रिलेटेड मैंने इसके बारे में मैंने पहले भी कभी आइडिया सुना है. सो व्हाट यू आर डूइंग, you are performing something in your mind, you are relating the ideas, you are connecting the ideas, because I told you कि listening में सिर्फ कान अटेंटिव नहीं होते, माइंड का अटेंटिव होना बहुत जरूरी है. नाउ व्हेन आई से कि माइंड का अटेंटिव होना जरूरी है, व्हाट डज इट मीन कि माइंड में डिफरेंट चीजें चल रही होती हैं. से फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ एक्टिव लिसनर, कि वो चीजों को कनेक्ट करता है, वो आइडियाज को कनेक्ट करता है ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो सके. बिकॉज आई टोल्ड यू कि व्हेनेवर यू आर इन लिसनिंग प्रोसेस, what is the most important point, what is the most important result of listening? The most important result of listening is what? Understanding. Understanding अच्छी तरीके से हो जाए तो it means कि listening का process जो है वो complete, successfully complete हो गया. So what you should do, you should try to connect what you hear. यानी अभी तो speaker आपको share कर रहे हैं अपने ideas, उसको connection develop करें in your mind with the previous knowledge which you already have. आपके पास जो पहले knowledge है उससे connect करें, ideas इस तरह ज्यादा clarify होंगे, right? Don't just sit पैसिवली होके ना बैठें, बस ये ठीक है मुझे वर्ड सुनाई दे रहे, नथिंग एल्स. सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड ट्राई टू कनेक्ट द वर्ड्स. इन दिस वे योर आइडिया वुड बी मोर एंड मोर क्लियर अबाउट द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ दैट लिसनिंग process, right? Next is what? Don't be upset if you don't understand every word. Yes, while listening you should be very relaxed. You should be, this point is also related with this one, you should be very relaxed. Yes, although I said कि जी आपने attentive होके बैठना है, but being attentive doesn't mean कि आप इतने ज्यादा attentive हो जाएं कि आप understand ही ना कर पाएं. Means you should not be over conscious about the words which are said by the speaker. बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि जी मुझे हर word समझ आए. No, you should be very relaxed. Just understand the ideas. If you are not understanding each and every word, अगर हर word समझ नहीं आ रहा तो don't worry about this thing. Because if you will be worried about this thing, if you will be upset about this thing, and if you will have this thing in your mind कि जी मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं कौन से words हैं, I'm not getting it, कैसे होगा, क्या होगा? No, just be relaxed. And you should try to understand the main ideas and don't worry about this thing कि आपको हर word समझ आए. If you are getting the main ideas, that is also okay. Because if you will be obsessed with this thing, अगर आपके माइंड में यही टेंशन और परेशानी रहेगी कि I'm not getting it, क्या होगा, and I will have to get and understand each and every word, तो वो जो points आपको समझ भी आने थे वो भी नहीं आएंगे. Because you will be worried, you will be busy being worried about
this thing, तो फिर आपका mind जो है that will be confused, that will be nervous, and you will miss the points which you can understand very easily. So while listening, what you should do, you should not be upset if you are not understanding every word. Yes, just focus on the main ideas. ठीक है जी, if you are getting the main ideas, that's okay. But don't be yes, while having this thing कि मैंने कहा है that you should be attentive. You must be attentive while listening, but you should be very relaxed at the same time. आपको relax होके सुने, उसको enjoy करें, ठीक है? When you will enjoy the listening process, then it will not be a difficult task for you. You will never complain at the end कि जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई, right? Next is what? Yes, show patience. Don't interrupt. Another important method, another important strategy of effective listening process is what? You should show patience. Sometimes you would have seen such listeners, and even you would have experience in your life कि स्पीकर बोल रहे और आपके माइंड में चलो जी पता नहीं कौन सा पॉइंट ये डिस्कस कर रहे, ये कौन सी बात है, मैं तो समझ ही नहीं आ रही, ये क्या इसने डिस्कस कर लिया, ठीक है? सो दीज आर द व्यूज विच वी यूजुअली हैव. हम बड़ा ही उसको क्रिटिसाइज करते हैं. दिस थिंग शुड नॉट बी डन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग इन लिसनिंग प्रोसेस. अगर आप अच्छे तरीके से बात को समझना चाहते हैं, सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड बी वेरी patient. You should tolerate the words which are said by the speaker. उसको पेशेंटली उसको एक्सेप्ट करें, उसको फौरी तौर पे ये ना सोचें कि जी ये क्या बोल रहा है, मैं तो नहीं इसको सुन मानता या मैं इसको नहीं मानती, आई डोंट एक्सेप्ट दिस, आई एम नॉट एग्री विद दिस. तो ये बातें आप नहीं करनी, बिकॉज इफ यू विल हैव दिस आइडिया इन योर माइंड, इफ यू विल क्रिटिसाइज इट नेगेटिवली, तो फिर आपको जो बात समझ आनी भी है वो भी आप उसको नहीं समझ पाएंगे. बिकॉज थ्रू आउट दैट लिसनिंग प्रोसेस यू विल हैव योर ओन नेगेटिव criticism in your mind, and the words which are shared by the speaker, you will miss those words. So what you should do, you should be very calm and relaxed, ठीक है? उस time interrupt मत करें. Yes, if you have any questions, don't just get afraid or scared and hesitate to ask questions at the end. When the speaker he asks question at the end, अगर स्पीकर आपसे एंड में क्वेश्चन पूछता है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक व्हिच यू आर लिसनिंग, आप उसको जरूर क्लियर करें एट द एंड, बट नॉट इन द मिड ऑफ योर listening process. यानी mid में when the speaker is speaking and sharing his views, mid में अपने कभी भी negative criticism मत लाएं. In this way you won't be able to understand. You should welcome the ideas which are shared by the speaker wholeheartedly. Welcome करें speaker के ideas को. In this way you will be able to understand. लेकिन आप यही अगर mind में रखेंगे जी I can't understand this, yeah, I don't like the comments which are or the ideas which are shared by the speaker, then it leads to the negative ending of your listening process. So whenever you are listening, what you should do, you should show patience and you should not interrupt in the mid of the discussion. मतलब फौरी तौर पे आपकी ये नहीं होनी चाहिए बात कि जी मैं इसको रोकना चाहूँ, what is he saying, ये क्या कह रहे स्पीकर. No, you should not have such kind of attitude. You should listen patiently and you should be very relaxed. Yes, if you have any question, you may ask at the end. Next is jot down important points. Yes, you would have seen many reporters whenever they attend any kind of conference or meeting, they used to write important ideas which are said by the speaker. In this way उसके साथ उनकी क्या मदद हो जाती है कि जो वो सुन रहे हैं वो important points अपने पास लिख भी रहे हैं. Jot down का मतलब है लिखना. Whenever you are listening and you would have seen such students, many students कि वो जब टीचर का लेक्चर सुन रहे होते हैं वो important points लिखते जाते हैं. What is the advantage of writing those important points when you are listening? In this way एक तो आपके पास उसका एक record maintain होता है, plus you can understand it in a better way, because again and again I am telling you कि understanding is the main and important aspect of listening. तो अगर understanding अच्छे तरीके से हो रही है, then it means you are having a successful listening process. So what you should do whenever you are listening the ideas, the words or any content by the speaker, what you should do, you should jot down.
लिखें उसे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने पास, उसको एक प्रॉपर आप रिटन नोट मेंटेन करें, बिकॉज इन दिस वे यू विल हैव मोर क्लैरिफाइंग आइडियाज विद यू। आपके पास ज्यादा वो आइडियाज क्लियर होंगे, यू विल हैव अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ दैट थिंग, क्योंकि आपने उसे अपने हाथों से लिखा होगा। इन दिस वे यू विल नेवर मिस an important point which is actually shared by the speaker. So whenever you are listening any speaker, you should jot down and write down the important and keywords, right? Next is what? Yes, make guess or make guesses in your listening process. How? Say for example, if you are listening any idea at the start by the speaker, उसको connect करें, relate करें, उनको अंदाजा लगाएं, अच्छा जी he has said this thing because of that thing, इसने ये बात इसलिए की है क्योंकि इसका connection इससे अच्छा होता है। For example, if I have told you the difference between hearing and listening with the sound of fan and with the sound of a person who is speaking, तो अच्छा जी मैडम ने ये एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि यहाँ पे she wants to tell us about the difference and understanding of listening and hearing. So what I did, आपने सुनते हुए उस बात का guess यानी अंदाजा लगाया। When you predict something, when you guess something in this way, what you are doing, you are actively present. आप actively present हैं, यानी आपका mind जो है वो it is equally involved in that listening process. ये guess करना, connection develop करना, what you are doing, you are actively present and focusing on the words. आप guess कर रहे हैं, आप उसको connect कर रहे हैं ideas को, आप अंदाजा लगा रहे हैं, because there are many ideas which are shared by the speaker at the same time. अब एक ही वक्त में स्पीकर जो है वो समटाइम्स 10 आइडियाज शेयर करता है, समटाइम्स 5 आइडियाज शेयर करता है। सो व्हाट यू डू, जब आप उसमें गेस करते हैं, अच्छा जी से फॉर एग्जांपल उसने सेकंड पॉइंट शेयर किया है, सेकंड पॉइंट को आप थर्ड पॉइंट के साथ रिलेट कर रहे हैं, उससे गेस कर रहे हैं, अच्छा जी मे बी दिस आइडिया वुड बी शेयर्ड इन दिस वे बाय द स्पीकर। तो इस तरह आप उस आइडियाज, उन मेन वर्ड्स, उन मेन मैसेजेस के जो स्पीकर आपसे शेयर कर रहा है, इफ यू आर मेकिंग अ गेस ऑफ ऑल द आइडियाज, देन इन दिस वे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर। सो दीज आर few points about listening skills, and there are other skills as well which we will share inshallah later on. Are you clear about these important methods of listening? Okay, so inshallah we will talk about few more listening skills inshallah in the next class, right? Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.